Welcome to all of you on Grow Strong, dear students and other fellow listeners. Hope that you all are feeling well. Let us have a debate on entitled theme Classification and Levels of Visual Impairment. As we know that visual impairment is basically sensory defect which lies with the sense of sight. Senses are called the gateways of knowledge, as every bit of knowledge is received through different sensory organs. Sense of sight is being considered one of the important sensory organ. Dear students, visually impaired children are classified into 4 different categories, such as partially sighted, low vision, legally blind, and fully blind. Now, one by one, we will discuss all the categories of visual impairment. Partially sighted. Partially sighted are those visually impaired who have some complications in their seeing. यानी कि ये वो बच्चे हैं जिन्हें डिफिकल्टीज फेस होती है या जिन्हें देखने में इश्यूज और हिंड्रेंसेस पैदा हो जाती है, लेकिन जो पार्शियली साइटेड बच्चे हैं दे आर एबल टू सी एट नॉर्मल डिस्टेंस. ये नॉर्मल डिस्टेंस से चीज़ों को देख सकते हैं. इनकी विजुअल कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए विजुअल एड्स आर प्रिस्क्राइबिंग देम लाइक मैग्नीफायर्स, screen readers, and other assistive technological devices. Number 2, low vision. Dear students, low vision, visually impaired children are those who have serious problem. इनकी प्रॉब्लम सीरियस होती है as compared to the partially sighted children. जो लो विजन वाले बच्चे हैं they are not able to see at normal distance because they have lost some vision. इसीलिए चीज़ों को नॉर्मल डिस्टेंस से नहीं देख पाते हैं. तो इनकी प्रॉब्लम्स और हिंड्रेंस दूर करने के लिए स्क्रीन रीडर्स, lenses, and other devices are prescribing them. Number 3, legally blind. Legally blind are those visually impaired who possesses severe problem as compared to the partially sighted and low vision children. यानी कि लीगली ब्लाइंड जो बच्चा है उसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी पैदा हो जाती है एज कंपेयर टू बोथ. चाहे हम पार्शली साइटेड बच्चे की बात करेंगे या लो विजन वाले बच्चे की, क्योंकि इन बच्चों में अधिकतर विजुअल लॉस होता है या हम कह सकते हैं ज़्यादा विजुअल लॉस पाया जाता है. तो इस तरह से भी डिफाइन लीगली ब्लाइंड को कर सकते हैं. दीज आर दोज चिल्ड्रन हु possesses visual acuity of 20 by 200. It means what the normal eye can see the things at the distance of 200 feet, that can be seen by the legally blind child at the distance of 20 feet. यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को एक नॉर्मल आई साइटेड बच्चा 200 फीट से परसीव कर सकता है, उसी ऑब्जेक्ट को एक लीगली ब्लाइंड बच्चा 20 फीट से देख सकता है. लास्ट,
fully blind. Fully blinds are also called totally blinds. These are those children who have lost total vision. क्योंकि इन बच्चों में कंप्लीट विजन लॉस होता है, इसीलिए इन्हें फुली ब्लाइंड्स कहते हैं, टोटली ब्लाइंड्स कहते हैं, या हम इन बच्चों को थ्रोली ब्लाइंड्स भी कह सकते हैं। इन बच्चों में विजुअल एक्यूटी 0 होती है। इट मीन्स दे आर नॉट एबल टू सी। इन बच्चों के लिए ना तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ना ये बच्चे स्क्रीन रीडर की मदद से पढ़ सकते हैं। फॉर दीज देयर इज बेस्ट अल्टरनेटिव, दैट इज टच सिस्टम। आई मीन टू से यू ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम के जरिए ये लर्न कर पाते हैं। दीज वर द 4 different types or categories of visually impaired children. Dear students, now we will discuss levels of visual impairment. Visually impaired children are classified into 4 different levels, such as mild, moderate, severe, and profound level. Now, one by one, we will discuss all the 4 levels. Number 1, mildly visually impaired. Dear students, mildly visually impaired are those visually impaired children who possesses visual acuity of 6/9 or 6/12. It means जो नॉर्मल आईसाइट वाला बच्चा है वो एक ऑब्जेक्ट को 9 या 12 फीट से देख सकता है, और उसी ऑब्जेक्ट को एक माइल्डली विजुअली इंपेयर्ड बच्चा 6 फीट से देख सकता है। इसीलिए इनकी विजुअल एक्यूटी 6/9 या 6/12 होती है। नंबर 2, मॉडरेटली विजुअली इंपेयर्ड। Dear students, moderately visually impaired are those children who possesses visual acuity of 6/24. It means normal eyesight person जो है वो एक ऑब्जेक्ट को 24 फीट से देख सकता है। अगर वही ऑब्जेक्ट हम मॉडरेटली विजुअली इंपेयर्ड बच्चे के सामने रखेंगे तो वो उसी ऑब्जेक्ट को 6 फीट से देख सकता है। नंबर 3, severely visually impaired. Severely visually impaired are those children who possesses visual acuity of 6/60. It means नॉर्मल आईसाइट वाला पर्सन जो है, या हम कह सकते हैं एक बच्चा जो है वो एक ऑब्जेक्ट को 60 फीट से देखता है, लेकिन उसी ऑब्जेक्ट को परसीव करने के लिए, देखने के लिए हमें सिवियरली विजुअली इंपेयर्ड बच्चे को 6 फीट पे रखना है। अगर हम 6 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये बच्चा नहीं देख सकता है। नंबर 4, प्रोफाउंडली विजुअली इंपेयर्ड। प्रोफाउंडली विजुअली इंपेयर्ड आर दोज चिल्ड्रन who possesses 0 visual acuity. It means ये वो बच्चे हैं जिनका विजन कंप्लीटली लॉस हो चुका है। प्रोफाउंड लेवल में थ्रोली ब्लाइंड फॉल होते हैं या टोटली ब्लाइंड बच्चे फॉल होते हैं। इन बच्चों की परसेप्चुअल एबिलिटी नहीं होती है बिकॉज दे हैव लॉस्ट राउंड अबाउट 100% आईसाइट। इनमें कंप्लीट 0 विजुअल एक्यूटी पाई जाती है। इसीलिए इन बच्चों के लिए ब्रेल सिस्टम ऑफ एजुकेशन सबसे बेस्ट माना जाता है, एज दे हैव लॉस्ट द 100% विजुअल एक्यूटी। These were the 4 visually impaired children on the basis of degree of loss. This was all about the today's lecture. In next lecture, we will discuss characteristics and identification marks of
visually impaired children. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share, and subscribe the channel. Thank you and grow strong.